अब दवा मंगाएं, लैब टेस्ट ऑर्डर करें या डॉक्टर से रुजू करें, वो भी घर बैठे। आज ही अपने स्मार्टफोन पर Dawaii.pk की ऐप डाउनलोड करके अपनी सेहत को बेहतर बनाने का आगाज करें। Assalamu alaikum. My name is Dr. Saima Bhamani and I'm a skin specialist and I'm working at the Acne family practice. मेरी ट्रेनिंग UK में थी, so I have over 10 years experience and now I'm back and I'm practicing in Karachi. तो let's talk a little bit about जो कॉमन सवालात होते हैं डर्मेटोलॉजी के रिलेटेड, जो लोग सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं स्किन इश्यूज़ के ऊपर। लेकिन उससे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्किन स्पेशलिस्ट होता कौन है और ये इनके पास क्यों जाना चाहिए। तो स्किन स्पेशलिस्ट जो है, दिस इज़ अ डॉक्टर जिनको ट्रेनिंग होती है रिगार्ड्स टू योर स्किन, हेयर एंड नेल्स। ये तमाम चीज़ें जिनमें अगर कोई मसला आता है तो दिस इज़ द स्किन स्पेशलिस्ट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सी अ स्किन स्पेशलिस्ट, ठीक है। दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो स्किन स्पेशलिस्ट जो है उनको देखना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज ऑफ्टन जो स्किन की कंडीशंस होती है दे कैन बी वेरी ट्रबलसम। उनमें कभी खारिश हो सकती है, इट कैन बी पेनफुल, इट कैन बी लीकी एंड यूजली जो है ये बिकॉज इट अफेक्ट्स द वे यू लुक, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका मेंटल हेल्थ उससे काफ़ी इफेक्ट होता है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू सी समवन ताकि ये सारी जो है असरात ना आए। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जो स्किन की इश्यूज होते हैं दे आर एक्चुअली मार्कर्स ऑफ ग्रेटर सिस्टेमिक इलनेस। तो अक्सर ये होता है कि स्किन पे असरात पहले आ जाता है और अगर कोई जिस्म में कोई ख़तरनाक बीमारी है उनके सिम्टम्स थोड़े लेट आते हैं। तो दैट्स वाई अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट विल ऑलवेज पिक दीज साइंस अप एंड आपका डायग्नोसिस जो है वो जल्दी हो सकता है निस्बत के जो है थोड़ा सा डिले आए इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस एंड मैनेजिंग समथिंग which is more severe or significant. तो usually we recommend कि जो है patients see their skin doctors at least once a year for a general skin review. But if you have a specific skin condition, अगर आपको कोई specific issue है तो it is advisable that you see them regularly. Regularly इंसान को क्यों देखना चाहिए? Firstly, because if जो है a treatment needs to be changed, because skin के साथ ये मसला आता है not every skin is the same. तो जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो not necessarily will be suitable for you because आपका skin type is different. तो your body will accept it a bit differently. तो it is important कि अगर एक treatment काम नहीं कर रही है, you see them for a regular follow-up ताकि if we need to change the treatment plan, then we can change it and we can see if something else is suiting you more. On the other hand, ऐसा भी हो सकता है कि if you've been on one treatment for a long time and your condition is stable, then we need to step down the management. कि too much medication is obviously not very good. तो it is important कि अगर एक चीज़ पे आप काफ़ी अरसे से है तो फिर उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए ताकि मेडिकेशन का डोज कम हो, आपके सिस्टम में कम मेडिकेशन हो। अगला जो कॉमन सवाल होता है पेशेंट्स का इस हवाले से, ड्राई स्किन क्या होती है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो ड्राई स्किन को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले आप स्किन को समझें। सो इफ़ यू सी दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ द स्किन। स्किन के दो लेयर्स होते हैं, एक होता है डर्मिस, एक होता है एपिडर्मिस, ठीक है। तो डर्मिस के अंदर आपकी जो है वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, नर्व्स, वेसल्स, all the जो important आपके structures होते हैं वो dermis में होती है। Epidermis is like a coating on top of the dermis. और जो dry skin की condition होती है वो आपकी epidermis को affect करती है, so it affects this top layer of the skin. आपकी epidermis जो है वो usually every 30 days पे जो है वो shed होती है और नई skin आती है। तो जब हम कहते हैं कि dry skin होती है उसमें ये होता है कि ये जो epidermis है it becomes waterlogged, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और जब ये पानी भर जाता है तो ये जो सरफेस के ऊपर जो है ये क्रस्टिंग सी हो जाती है, पानी निकलने लगता है, ड्राइनेस हो जाती है बिकॉज द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो एक वाटर लॉग्ड स्किन को जो है वो ड्राई करके ये सारा पिक्चर बनाते हैं। तो इफ यू सी दिस इज़ अ वेरी पिक्चर ऑफ अ वेरी सिवियर ड्राई स्किन जिसको हम एक्जिमा कहते हैं। अब ये एक्जिमा क्यों होता है इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन टू कंसिडर। तो इसके जो है वो दो मेन फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये आता है कि इफ यू पुट समथिंग ऑन योर स्किन दैट इज़ इरिटेटिंग, कोई आपने ऐसी क्रीम लगा दी, लोशन लगा दी जो आपकी स्किन को सूट नहीं करी, उसने जो है ये वीपी एपिडर्मिस बना दिया और ये रिएक्शन हो गई।
So that is when it is caused by an external factor. Internal factor में ये आता है which is what we call as endogenous or atopic eczema. उसके अंदर ये होता है कि जो है आपकी genetic predisposition होती है, आपकी फैमिलीज़ में ये चीज़ रन करती है. आप कहते हैं कि हमारे वालिद को भी ये था या बहन भाइयों में ये था, फैमिलीज़ में रन करती है. और इस कंडीशन के अंदर जो है वो 2-3 और बीमारियाँ होती हैं, जैसे आस्मा है, राइनाइटिस है, ये सब का एक ट्रायड होता है. ये सब जो है ये सारी बीमारियाँ ज़्यादा इन पेशेंट्स में पाई जाती है. तो उस कंडीशन के अंदर भी ये ड्राई स्किन का प्रॉब्लम होता है. तो दिस इज़ व्हेन इट इज़ एटोपिक एक्जिमा और इंटरनल, जिसको इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हम कहते हैं कि एक्जिमा है. हाउ डू यू मैनेज इट? इसको किस तरह से हमें मैनेज करना है? इसके मैनेज करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि ये इसमें पानी भरा हुआ है. यू अप्लाई अ कोट जिससे ये मॉइस्चर अंदर रिटेन हो और ये बाहर ना जाए. तो दैट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजिंग एक्जिमा. और ये कोट जितना ज़्यादा डीप होगा, जितना बेहतर होगा, उतना आपकी स्किन ज़्यादा अच्छे से मैनेज होगी. तो मेन मैनेजमेंट ऑफ एक्जिमा में हम लाते हैं, वी कॉल इट इमोलियंस. तो दीज आर क्रीम्स या लोशन जो अवेलेबल होते हैं जो कि एक बैरियर बना देते हैं ऑन द स्किन सरफेस एंड दे प्रिवेंट दिस वाटर फ्रॉम एस्केपिंग. तो दैट इज़ हाउ द मॉइस्चर रिटेन्स इन योर स्किन और जो है वो आपकी स्किन ड्राई नहीं होती. तो मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगी ऑफ व्हाट वी यूजुअली पुट. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ लोशन. ठीक है, This you can see is mainly water based. आप देख सकते हैं कि इसमें water content ज़्यादा है और इसमें fat content कम होता है. तो when you apply it to your skin, आपको जो है इसको काफ़ी रब करना पड़ता है तो ये sink in हो. इसमें already काफ़ी water है. So is this really a good remedy for eczema? You can say थोड़ा बहुत है because इसमें जो है fat content कम है और water content ज़्यादा है. This is what a lotion is. ठीक है. The next thing is what we call as a cream. इसकी आप thickness देखें. This is thicker, right? इसको अगर मैं स्किन पे लगाती हूँ तो ये ज़्यादा thick feel होता है, ज़्यादा चिपचिपाहट लगती है आपको. But this is actually a better barrier because ये एक अच्छी coating है and इससे पानी कम evaporate होगा, so it will keep the moisture in. So when you compare what to use, जेल में सबसे ज़्यादा पानी होता है, देन कम्स अ लोशन में उससे थोड़ा कम पानी होता है, देन कम्स अ क्रीम. सो दिस इज़ अ लैडर जो हमारा इमोलियंट लैडर होता है. तो डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप आपको ये पता करना है, इज़ अ जेल सूटेबल, इज़ अ लोशन सूटेबल और इज़ अ क्रीम सूटेबल फॉर यू. वी से द थिकर यू गो द बेटर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ योर स्किन and the better it is at managing the eczema. तो अगर बहुत severe eczema होगा, we will recommend you a cream versus a gel or a cream versus a lotion. The other thing जो पाकिस्तान में available नहीं होती है लेकिन अगर आप बाहर मुल्कों में जाएं तो एक होता है ointment. Ointment is an even more superior form of a cream. उसका nature is more like a petroleum jelly consistency. वो अगर आप लगाएंगे तो आपको लगेगा आपने बटर की एक लेयर लगा दी अपनी स्किन पे. It is that sticky. But in terms of managing the eczema, it is great because वो आपका मॉइस्चर और ज़्यादा अच्छे से रिटेन करेगा. आपकी स्किन although you will feel कि बहुत स्टिकी है, but आपका एक्जिमा के लिए it is actually quite good. Then जब आपके इमोलियंस वर्क नहीं करते हैं तो then we switch over to anti-inflammatories because इसके अंदर क्या होता है, ये पानी से भरी हुई स्किन है. It is going to attract bacteria, it is going to attract fungus. तो सुपर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो when the skin then becomes angry, that's when we introduce anti-inflammatories जिसमें आपका steroids आ जाते हैं. Again steroid में भी एक ladder होता है. We want to use the minimum dose of steroid to manage the condition because steroid के अपने side effects होते हैं. And we want कि आपकी skin manage हो with the least amount of side effects. So it is always best to see your skin doctor, your dermatologist or your family practitioner जो आपकी skin manage कर रहे हैं to find out what is best for your skin. So please, whenever you do have this condition, do see your doctor and then get on a treatment plan ताकि फिर आप उसको जो है वो maintain कर सकें and then obviously if there needs to be any changes तो you can then see them for regular follow-up.
ओके, तो दूसरा जो सवाल होता है मोस्ट कॉमनली आस्क्ड वो ये है कि व्हाट शुड यू ईट फॉर अ हेल्थी स्किन। तो देखिए, द बेस्ट थिंग इज व्हाट यू कैन डू फॉर योर स्किन इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमारा माशरा इज सो हॉट दैट हमारी स्किन जो है वो लूजेस अ लॉट ऑफ वाटर from itself as a result of the temperature conditions. So what is recommended is कि आप at least 3 to 4 liters of water you should drink every day to keep your skin hydrated. ठीक है? And this is the best way to have a glowing skin. In other words, इसके अलावा the other things you can do is we usually say keep a balanced diet. So have enough of your fruits and vegetables. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, सो दोज आर रियली गुड टू फाइट एनी सॉर्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स जो आपकी बॉडी में बनते हैं दैट कैन कॉज डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन एंड इस तरह की चीज़ें। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सब में ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। सिमिलरली विटामिन सी इज़ वेरी गुड एज वेल। तो विटामिन सी ऑल्सो हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़। एक और थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हमारे माशरे में ये होता है कि फ़िश जो है इट इज़ नॉट गुड फॉर द स्किन और फिश को नहीं खाना चाहिए। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ प्रूवन कि फ़िश इज़ नॉट गुड। फ़िश इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर स्किन। फ़िश, नट्स, ऑल दीज थिंग्स हैव गॉट ओमेगा फैटी एसिड्स एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर योर स्किन रीजेनरेशन एज वेल। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो है आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए फॉर अ बेटर स्किन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्लीज़ नॉट टू यूज़ सोप। सोप इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन। सोप के अंदर जो केमिकल्स होते हैं दे एक्चुअली रिएक्ट with your skin lining and they can damage the skin cells. So it is recommended that for dry skin or for any skin type you should avoid soap as much as you can. If the skin is very dry, हम कहते हैं कि आप soap substitute से wash करें अपने आप को। Soap substitutes are basically like a gel or a lotion form which are neutral. तो इसमें कोई fragrance नहीं होता है, इसमें कोई इस तरह के जो है वो chemicals नहीं होते हैं। They are very bland, rich, creamy texture होता है इनका। तो when you take a bath with that, that will prevent your skin from drying out and that will really help with your dry skin. So the next important thing to then talk about is the role of sun protection and why is it needed. तो जो है सन में जो है एज यू कैन सी हमारे माशरे में भी इट इज़ अ वेरी हॉट क्लाइमेट। सन के अंदर हार्मफुल रेडिएशन होती है। सो देयर इज UVA, UVB जो कि अर्थ को पेनिट्रेट करती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम UVC डज नॉट रीच द अर्थ, ओनली UVA and UVB रीचेस। UVB जो है वो आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर सकती है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन। तो जो आपकी टैनिंग होती है और जो सनबर्न जो आपका जिसे आप कहते हैं दैट इज़ कॉज्ड बाय UVB. UVB इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्किन एजिंग। तो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फोटो एजिंग। एक क्रोनोलॉजिकल एजिंग तो होती है जो आप वक्त के साथ साथ आपके चेहरे पे जो वक्त के चेंजेस आते हैं जैसे फाइन लाइन्स, रिंकल्स और दीज थिंग्स आती है। लेकिन एक आती है सन एक्सपोजर की वजह से भी जिसे हम फोटो एजिंग कहते हैं। सो UVB इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो एजिंग एज वेल। UVA ऑन द अदर हैंड जो है ये भी सन से आती है और ये these rays are deeper, they penetrate the skin a lot more और ये क्या करती है कि सेल्स के अंदर जाके आपका DNA चेंज कर सकती है। सो दे आर एक्चुअली कैंसर कॉजिंग। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट आपको जो है प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट दिस हार्मफुल UVB एंड UVA ताकि आपकी स्किन कैंसर के चांसेस कम हो। एंड इफ़ यू आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट टैनिंग एंड पिगमेंटेशन एंड फोटो एजिंग देन you need some sort of protection. So what is the protection you need is basically in the form of a sunscreen. Sunscreen क्या करती है? When you apply a coat, it reflects the light away. It reflects the UVB and UVA. So you see, here is no sunscreen. आपके इतने सारे photons enter the skin. With SPF 15 of protection, you have only 7 coming in. And with SPF 30, you have only 3 coming in. So what is this SPF? It is very important to understand what SPF is. So SPF is basically what gives you protection against UVB. UVB का protection जो है हम SPF कहते हैं. And let's say if you've got one skin that has got nothing on and one skin जिस पे आपने SPF 30 का कोट लगाया.
So what is the difference between the two? Difference is कि ये जो SPF 30 का coat है, this has got 30 times less chances of producing a reaction in the sun as compared to something that doesn't have anything. Okay? So the higher the number, the better. So 50 का SPF has got 50 times less chances of producing a reaction in the sun as compared to nothing. So usually we say the higher the number, the better in terms of UVB protection you are getting. SPF does not give you any protection against UVA. UVA का जो protection होता है, that is denoted in terms of star. So this is one sunscreen that I've got for you. So you see this is 50 SPF. So this is 50 times as likely to protect you in terms of UVB as compared to someone who doesn't have anything on. और ये आप देख रहे हैं, ये स्टार रेटिंग है, ये UVA के अंदर आ रही है. तो दिस इज 5 stars out of 5. So UVA का प्रोटेक्शन यू गेट इन टर्म्स ऑफ स्टार 0 to 5 के स्टार्स होते हैं. द हायर द नंबर ऑफ स्टार्स द बेटर द प्रोटेक्शन. ठीक है. So a 5 star or a 4 star is very good. Usually we aim for 5 because that's the maximum protection it can offer. So that is what you have, the protection against UVA. So always get a sunscreen that protects you from both UVA and UVB. That means it's got SPF protection as well as the star rating on it. तो ये आपने ज़रूर check करना होता है for your sunscreen. The other thing is how should you be applying it? तो it is very important कि आप इसे apply करें. Usually we recommend आप 2 coats करें. 1 coat तो आप करें ही करें. And the second coat you do to cover any areas that you accidentally might have missed in the first one, ताकि आपको full protection मिले. And we say कि after every 2 hours, if you are out in the heat, you should apply a second coat as well. And अगर आप sweat कर रहे हैं या आप water activities में engage कर रहे हैं, that's going to wash away your sunscreen. So you need to reapply. So it is quite a painful task. लेकिन it gives you protection, and it gives you protection against all these things which are actually really important. So there is no such thing as that. You can take a shower and then apply, because the problem is often ये जो है ना, जैसे this is a cream, तो again it will be thick. तो अगर आप जो है इसमें भी जो है वो variations आती हैं in terms of gel, lotion, cream, तो you need to figure out what is best for you. अगर आप shower लेके apply cream apply कर रहे तो you know that will feel more moisturizing, और आपको you will feel generally good. But you can, even if you've not taken a shower, if you are just going out in the sun, having some protection is better than not having any protection on. So you apply it as soon as you're going out, and it works. Misconceptions जो है काफ़ी होते हैं हमारे आजकल के माशरे में in terms of what to use for the skin. A lot of people use the traditional method कि जो है हमने हल्दी का पेस्ट लगा लिया, हमने जो है वो ऑयलिंग कर ली. ऑयलिंग इज़ एक्चुअली रियली गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि अगेन इट इज़ फॉर्मिंग अ बैरियर. वो आपकी ड्राई स्किन के खिलाफ जो है वो इट विल एक्ट. लेकिन अदर थिंग्स जो हम यूजली अप्लाई करते रहते हैं, ऑल दीज अदर देसी टोटकाज एंड ऑल दीज अदर थिंग्स, उनको अप्लाई करने का सिर्फ खतरा ये होता है कि हम जो ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, जो क्रीम्स हैं और जो चीज़ें हैं, दे अंडरगो अ रेगुलेटरी बॉडी. ये एक प्रोसेस से गुजरते हैं, उन पर रिसर्च होती है, ये रेगुलेटरी बॉडीज अप्रूव करती है आफ्टर दे हैव अंडरगॉन रिसर्च इनटू इट, एंड वंस दे गेट अप्रूवल डू दे देन कम इनटू द मार्केट. देसी टोटकाज एंड ऑल दीज थिंग्स होती है विच आर गुड आई सपोज, बट उस पर इतना रिसर्च नहीं हुआ हुआ है. किसी ने उस पर उसको वैलिडेट करने के लिए, उसका इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए, देयर हैव नॉट बीन इनफ स्टडीज टू सी कि इज इट रियली इफेक्टिव और नॉट, और इज इट एक्चुअली कॉजिंग एनी हार्म. So always before applying anything to your skin, it is important to see कि उसका फ़ायदा क्या है, and whether there's been any research to prove that it is beneficial. So that's why we always suggest that you go to a doctor and you get what is out in the market that has been researched upon and जिसका एक scientific basis है for use. So that's really important to keep in mind. So clay masks again जो है वो use होते हैं to brighten the skin. I think that is the concept behind it. Again, इसका effectiveness कितना है, nobody has researched into it, or even if there has been any research, it is not substantial enough to see उसका क्या benefit है.
So before you go into these clay masks and things, क्योंकि often क्या होता है clay mask की ingredients उसमें है क्या, nobody knows. उसमें कोई package नहीं होता है, उसमें कोई label नहीं होता है to tell you कि इसमें ये ingredients हैं. And whether you are going to react to that clay mask, again nobody knows. Because what happens is कि everyone's skin type is different. तो आपने सुना होगा कि so and so ने ये clay mask लगाया, उसकी skin बहुत बेहतर होगी, they've got a glowing skin. But whether आपकी skin इसके साथ react तो नहीं कर रही है, something you don't know. तो I won't say कि आप नहीं use करें, अगर आपको benefit लगता है तो आप use करें, but again it's always good to use a test dose first to see if you are reacting against it. To do a test dose, you know, आप अपने corner of the face पे आप एक थोड़ा सा जो है patch लगा के you wait 2 hours and see if you are reacting. If you are not reacting, you know at least you're not allergic to it. And then you can see if it helps you or not. But again, some skins को वो suit करेगा, कुछ को नहीं. कुछ में it might be the cause for acne and other problems, क्योंकि if it is blocking your pores and if it is blocking your glands, तो उससे मसला ज़्यादा हो सकता है. तो again, when you are using these products, as I say, इन सब पे इतना research नहीं हुआ है, इन सब पे इतना market approval नहीं है. Nobody has they've not gone through a screening process to label them safe. तो इसकी जो है effectiveness is very questionable. So please use it with caution if you are using. Question जो लोगों के जहन में होता है is what is acne? It is something that a lot of our population is being affected by. इसके जो है वो 2 मेन पीक्स आते हैं. एक तो टीनेजर्स में ये बहुत इफेक्ट होता है और दूसरा मल्टी जो मिडिल एज ग्रुप है उसमें भी ये काफ़ी इफेक्ट करता है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्ने एंड व्हाट कॉजेज इट? तो एक्ने इज नथिंग बट आपकी ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है उनमें ब्लॉकेज हो जाती है एंड ज़्यादातर इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है ऑन योर फेस, ऑन योर अपर चेस्ट, ऑन योर बैक. यूजुअली ये जो आपके ग्लैंड्स होते हैं ये हेयर फॉलिकल्स के काफ़ी बराबर में होते हैं, इसलिए जो है वो जो हेयरी एरियाज होते हैं वहाँ पे जो है इसका ये डिजीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है. इसमें ऐसा काफ़ी मिसकंसेप्शंस आते हैं एक्ने के खिलाफ कि जो है वो ठीक है ज़्यादा ऑयली स्किन है तो रिपीटेड फेस वॉशिंग से ये बेहतर हो जाएगा. रिपीटेड फेस वॉशिंग डज नॉट हेल्प. फेस वॉश अगर आप कर रहे हैं इट इज़ ओनली गोइंग टू ड्राई योर स्किन. आप जितनी दफ़ा वॉश करेंगे आपकी स्किन ड्राई होगी, आपकी ग्लैंड ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेट करेंगे, वो ज़्यादा ऑयल बनाएंगे एंड द एक्ने इज गोइंग टू गेट वर्स. सो प्लीज़ रिपीटेड फेस वॉशिंग डज नॉट हेल्प इन एक्ने. ठीक है. एक्ने का अगर हम ये जो फॉर्मेशन हम देखें तो वो इसीलिए होती है कि ये आपका हेयर फॉलिकल है, यहाँ पे इसके बराबर में आपकी जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, इसमें ब्लॉकेज आ जाती है फॉर सम रीज़न और दी अदर. उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो एक वाइट हेड बन जाता है, पिंपल बन जाता है. उसके अंदर थोड़ी और इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये ब्लैक हेड बन जाता है और फिर उसके बाद उसमें पस आ जाती है तो ये पस्ट्यूल बन जाता है. वो पस इनलार्ज हो जाता है तो फिर उसके अंदर एब्सेस बन जाते हैं. फिर ये हम एब्सेस जब ट्रीट करते हैं तो बिकॉज द स्किन इज डिस्ट्रक्टेड उसमें स्कारिंग आ जाती है. So this is basically, again you can see these are some pictures of black heads and white heads and this is advanced acne जिसके अंदर आपका pus formation हो गया है, abscess हो गया है and then it leaves with this scarring. So how do you minimize all of this is very important to think about. तो जो हम acne के लिए हम treatments में जो हम aim करते हैं वो मेनली यही डायरेक्टेड होते हैं टू स्टॉप द ब्लॉकेज इन द ग्लैंड्स. हम इसे किस तरह मैनेज करें एक्ने को. तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स आती है. देयर आर टॉपिकल ट्रीटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हम आपको चीज़ें देते हैं टू यूज़ ऑन योर स्किन विच माइट बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्रीम और अ जेल और अ लोशन. जो एंटीबायोटिक क्रीम्स हो सकती है या तो फिर उस तरह की क्रीम्स होती है दैट हेल्प अनब्लॉक द ग्लैंड्स. ठीक है. जिसमें हम कभी कभार बेंजाइल पेरोक्साइड जो है केमिकल होता है वो हम यूज़ करते हैं. दैट हेल्प्स टू अनब्लॉक द ग्लैंड्स. एंड देन इफ दोज टॉपिकल ट्रीटमेंट्स डोंट वर्क तो देन वी माइट गिव यू टैबलेट्स टू टेक which go in the form of oral antibiotics हो सकती है. एंड एडवांस्ड एक्ने के अंदर हम एक मेडिकेशन यूज़ करते हैं रेटिनॉइड्स और आइसोट्रेटिनोइन. ये एडवांस्ड एक्ने में हम यूज़ करते हैं. दिस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर mild to moderate acne.
इस मेडिकेशन के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रेगुलर स्क्रीनिंग बिकॉज ये जो है आपकी किडनीज एंड आपकी लिवर पे अफेक्ट कर सकता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम आपको ये स्टार्ट करें वी डू सम बेसलाइन LFTs और किडनी फंक्शन हम करते हैं एंड वी रेगुलरली लुक फॉर इट, रेगुलरली टेस्ट यू एवरी 3 to 6 months टू सी कि इस मेडिकेशन के असरात आपकी लिवर एंड किडनी पे नहीं आए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम इस तरह का मेडिकेशन बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन और आपकी एक्ने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बट बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट प्रोफाइल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओनली यूज़ इट अंडर सुपरविजन, अंडर अ डॉक्टर सुपरविजन या आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट प्रोफाइल. तो acute acne is when you see an acneiform eruption. So when you see that your acne is getting worse, the number of इसकी एक पूरी ग्रेडिंग सिस्टम होती है. हम कहते हैं माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर एंड सीवियर, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी जो है इन्फ्लेमेटरी लीजन्स you've got. So depending on how the number of blackheads, the number of spots you've got, the number of abscesses you've got. As soon as abscess आ जाता है या pustules formation आ जाती है, severe acne में change हो जाता है. And when you have severe acne, this is an acute acne that needs treatment. तो उस टाइम पे जो है if there is a severe acute acne, topical treatment might not be the best form. We might start immediately with either antibiotics या either isotretinoin and then manage it. And then जब ये काम हो जाता है then we might switch you over to the topical agents ताकि फिर वो maintain रहे. Because to have too much of the isotretinoin again because of the side effect profile is not beneficial. तो treatments alter करनी पड़ती है depending on which stage of acne you're at. And another thing that I forgot to mention was एक acne की form होती है जो specifically खवातीन में पाई जाती है जो PCOS के साथ associated होती है. So PCOS is a condition that affects a lot of women जिसको हम polycystic ovarian syndrome कहते हैं. ये hormonal imbalance की वजह से आता है और इसके अंदर भी एक acne की eruption होती है. ये आपके ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एक्ने से नहीं बेहतर होते हैं जो हम ट्रेडिशनली एज आई सेड हम मेडिकेशंस देते हैं टू अनब्लॉक योर ग्लैंड्स और टू डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स या आइसोट्रेटिनॉइड. इस फॉर्म को जो है हम हार्मोनल मेडिकेशन से मैनेज करते हैं बिकॉज द कॉज हियर इज द इम्बैलेंस इन द हार्मोन. तो सम ऑफ द ट्रेडिशनल वेज ऑफ मैनेजिंग एक्ने विल नॉट बी सूटेबल इन दिस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स. तो उसके अंदर हम मैनेजमेंट थोड़ी सी चेंज करते हैं. दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किन डॉक्टर से रुजू करें बिफोर यू स्टार्ट. सो अनदर फॉर्म ऑफ एक्ने इज मेडिकेशन इंड्यूस्ड एक्ने. ओके, तो ये वाली फॉर्म जो है नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो बट सर्टेन मेडिकेशंस कैन कॉज एक्ने एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट one of the main medication that causes this sort of acne is a steroid cream. So steroid cream when used in excess has got a lot of side effects. That's why हम हमेशा steroid cream बहुत cautiously देते हैं. This form of acne as you can see is steroid induced acne. इसकी लुक थोड़ी डिफरेंट होती है, only a dermatologist can tell you. तो अक्सर जो है आप ख़वातीन जो है वो यूज़ करती है स्किन लाइटनिंग क्रीम्स एंड ऑल दीज थिंग्स जिसके इंग्रेडिएंट्स किसी ने नहीं पढ़े होते. बट अगर आप फाइन प्रिंट में जाएँ तो अ लॉट ऑफ देम डू हैव स्टेरॉइड इन इट. और दिस हेल्प्स बिकॉज येस इट लाइटन्स योर स्किन एंड इट मेक्स यू लुक फेयर, but it comes with the cost of sometimes causing this sort of eruption. That's why it is really important कि आप देखें आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं before applying. Another important question is dandruff. ये जो है काफ़ी लोगों को अफेक्ट करता है, बच्चे बड़े बूढ़े everyone is affected. बच्चों में especially it is quite common. न्यूबॉर्न्स के अंदर ये काफ़ी अफेक्ट करता है. उसमें हम इसको सेबरिक डर्मेटाइटिस के नाम से कहते हैं. उसमें ये होता है कि आपकी जो स्कैल्प है उसके अंदर सीबम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है. दैट्स वाई आपको ये फ्लेकीनेस दिखती है एंड इट मेक्स योर हेयर अ बिट ऑयली बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन. सो व्हाट डू यू डू अबाउट इट? इस एक्सेसिव सीबम की वजह से जो है हेयर फॉल भी हो सकता है एंड द टू आर इंटरकनेक्टेड. सो व्हाट डू यू डू अबाउट इट? इसका काफ़ी वेज है ऑफ मैनेजिंग दिस. एक्सेसिव सीबम की वजह से जो है आपके अंदर कॉलोनाइजेशन होती है एक यीस्ट की जिसका नाम है मैलासीजिया फर्वा. तो ये एक जो है यीस्ट है जो कि हैंड इन हैंड ग्रो होता है विद एक्सेसिव सीबम.
और दैट्स वाई जो है व्हेन यू सी अ डॉक्टर और समवन दे माइट गिव यू एंटी फंगल शैम्पूज। तो ये एंटी फंगल शैम्पूज जो है दे आर डायरेक्टेड एट गेटिंग रिड ऑफ दिस यीस्ट जिसकी कॉलोनाइजेशन होती है विद एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन। तो ये हम टारगेट करते हैं टू डिक्रीज द डैंड्रफ, बिकॉज व्हाट हैपन्स है इसके पॉकेट्स बन जाते हैं हर जगह इन द स्कैल्प एंड यू माइट सी एरियाज जहाँ की बहुत स्केली रिंग्स बन जाती है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव सीबम। सो हाउ डू यू गेट रिड ऑफ दिस? ऑयलिंग हेल्प्स। ओके, सो ऑयलिंग इज वेरी गुड। ऑयलिंग जो है वो आपकी ये एक्सेसिव जो ये स्केल्स बनती है उसको डी स्केल करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। विच ऑयल शुड यू बी यूजिंग? एनी ऑयल इज़ गुड। द आइडिया इज़ कि ये आपकी स्केल्स को डिजॉल्व करे। तो ऑलिव ऑयल यू कैन यूज़, कोकोनट ऑयल इज़ ऑल्सो गुड, बट कोकोनट ऑयल जो है वो विंटर के अंदर जम जाता है एंड इट कैन कॉज मोर प्रॉब्लम्स। तो यूजली ऑलिव ऑयल इज समथिंग विच यू कैन यूज़ दैट हेल्प्स इन डी स्केल। The other thing that we use for dandruff is shampoos that have anti-inflammatory agents in it, जिसके अंदर zinc pyrithione जो है वो यूज़ होता है। Head and Shoulders is a classic example, उसमें zinc pyrithione जो है उसकी ingredient होती है, so that again helps with the inflammation and the sebum production. Okay? Or another thing that we use is tar-based shampoo. So again, tar जो है is directed at getting rid of this excessive sebum and scaling and inflammation. तो tar based shampoos हम use कर सकते हैं, and if there is a lot of sebum and there's a lot of scaling when we suspect कि इसमें कोई infection है with a yeast, तो फिर हम antifungal shampoos देते हैं, which we say कि you use with oiling as well. And the way to use all these medicated shampoos is we usually say कि you lather it on for 5 minutes, at least 5 to 10 minutes आप इसे अपने सर पे रखें ताकि जो है वो इसका they are effective, and then you wash it. And one thing to remember is often patients जो है वो discontinue कर देते हैं ये treatments because जब आप इस तरह के medicated shampoos use करते हैं तो इसमें ये वाले chemicals नहीं है that give your hair the shine and the bounce, and you know it's not. These medicated shampoos are not meant for that purpose. इनका purpose है to get rid of the scale and the infection and the excessive sebum. So the hair quality is quite poor. उसके बाद आपको अपने बाल काफ़ी रूखे सूखे टाइप लगते हैं। तो इसके अंदर हम usually advise ही करते हैं कि you use the medicated shampoo, you leave it on for 5 minutes, you wash it off, and then you use your normal shampoo जो आप अपना normal use करते हैं for your shine and for your bounciness and whatever, because that's got all those chemicals in it that give you that thing. So then you can use that on top, and that will get rid of the the medical side of things as well, and also give you that shine and the bounce that you want. So you can do that. अक्सर जो है वो ख़वातीन ये भी पूछती है कि how often should you be washing your hair, और बाल जब हम वॉश करते हैं तो उससे जो है काफ़ी हेयर फॉल होता है। देखिए, it is normal to shed 100 hair per day. This is a given fact. अब वो या तो आप शावर में शेड करें या आप कोमिंग में शेड करें, या बिकॉज हेयर का एक नॉर्मल साइकिल होता है, वो हर रोज़ 100 बाल झड़ते हैं और वो नया जो है वो हेयर फॉर्मेशन होता है एंड इट ग्रोज। कुछ पीरियड्स आपके ऐसे होते हैं जिसमें बालों का झड़ना ज़्यादा होता है व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, व्हेन यू आर अफेक्टेड बाय अ सर्टेन इलनेस, एंड ये सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं होता, इट कैन इवन प्रोलॉन्ग आफ्टर द इलनेस इज रिजॉल्व या आफ्टर द स्ट्रेस इज रिजॉल्व, एंड इट कैन टेक अप टू 4 to 6 months ऑल्सो फॉर द हेयर शेडिंग पीरियड टू रिजॉल्व। So this is completely normal. इसके अंदर आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है, as long as you are not forming any bald patches, generalized thinning अगर हो रही है तो this is completely normal, and जब आपका वो एपिसोड रिजॉल्व हो जाएगा आपकी जो है वो हेयर फॉर्मेशन इट विल गो थ्रू एन एक्सेलरेटेड फेज, उसको हम एक्सेलरेटेड फेज ऑफ हेयर ग्रोथ कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अचानक से जो है वो आपके हेयर आ जाते हैं, एंड दिस एक्सेलरेटेड फेज यू ऑल्सो फाइंड इन प्रेगनेंसी एज वेल। तो दैट्स वाई ख़वातीन कहती है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो बाल ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं बिकॉज उसमें एक्सेलरेटेड फेज ज़्यादा चल रहा होता है। सो योर हेयर हैज़ अ साइकिल, it is going to have a phase of excessive shedding, then it will have a phase of excessive growing, then it will have a resting phase. So this alternates. So this is quite a normal process. Coming back to how often should you be washing your hair, तो देखिए the more chemicals you will use, obviously hair shedding उससे भी होती है। अगर आप dye use करते हैं उस तरह की
chemicals, harsh chemicals आपके आ रहे तो yes they will shed, थोड़ा ज़्यादा उसमें हो भी सकता है, लेकिन it is important कि as long as you are using at least 2 to 3 times a week if you are washing your hair, that is good enough, because then it is important कि आपकी जो आपकी धूल मिट्टी होती है इसे भी वॉश करना, आपकी जो स्वेटिंग होती है, अगेन द ऑयलिंग जो आपकी नॉर्मली प्रोड्यूस होती है, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वो भी वॉश हो. सो यू हैव टू कीप अ फाइन बैलेंस. सवाल करते हैं वो है अबाउट द रोल ऑफ विटामिन्स एंड बायोटिन. बायोटिन इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक दीज डेज. शुड यू बी टेकिंग इट, शुड यू नॉट बी टेकिंग इट, व्हाट इज़ द बेनिफिट? तो देखिए, विटामिन्स आर गुड, स्पेशली इफ योर डाइट इज़ नॉट sufficient. So अगर if you are having a balanced diet with enough vegetables, with enough fruits, which is mainly the source of vitamins, egg जो है, all of these things, they are good sources of vitamins. Coming to biotin specifically, good sources of biotin are your dal, rice, nuts, egg yolk, all of these things have got a lot of biotin. The normal daily requirement for biotin is 30 micrograms per day. Your diet should be enough to get this 30 micrograms a day easily, because all of us eat these sort of things, right? जो biotin supplements है, a lot of people benefit from it, but जो research हुई है and जो data हमारे पास है, that has actually shown कि that the biotin supplements are only helping those who've got a biotin deficiency state. So if you don't have enough biotin and if you're taking the biotin, yes, it is going to help you, because biotin is very good for your nails, for your hair, for your skin in general. So if you have a deficiency of biotin, yes, it is going to help you because you're making up this deficiency. Usually सिर्फ nutritional deficiency की वजह से biotin की कमी नहीं आ सकती, absorption की कमी भी आ सकती है. So if you are taking some medications that are interfering with the biotin uptake, sometimes anti-epileptic medications can interfere with this uptake. Yeah, if you are taking prolonged antibiotics, ये जो है वो आपकी gut में कुछ changes करती है जिसकी वजह से biotin uptake can be impaired, then the biotin absorption can be affected. Or if you excessive alcohol intake अगर किसी का हो, या pregnancy stage, so all of these things can affect the absorption of biotin. तो उसके अंदर आपकी biotin deficiency state आती है कि जो है आपकी enough biotin आपकी body को नहीं मिल रही है, and in that case if you are taking a biotin supplement, then yes, it is going to help you. But it is very difficult to then establish कि true biotin deficiency किस में है और किस में नहीं है, because these are very difficult things to measure. Especially if you've taken antibiotics or if you're taking any medications that are interfering with the absorption, तो true biotin deficiency state किसके अंदर है is very difficult to tell. It is very difficult to establish whether there is a true biotin deficiency or not. One thing to keep in mind is कि जो biotin के supplements है उनकी doses होती है 500 to 1000 microgram per day, and your daily requirement is 30 microgram. So what you need to see is what is the benefit of taking the high volumes of biotin. Is it really going to help you? So far, no toxicities have been reported. तो हमें ये नहीं पता कि excessive biotin लेने से कोई मसला होता है या नहीं. So people take it, and if you benefit from it, then I guess take it. So a very hot topic these days is skin aging, and what can you do about it? So as I mentioned, skin aging जो है दो तरह की होती है. एक है chronological aging जो कि वक्त के साथ साथ आती है, और एक है photo aging जो कि UV radiation की वजह से होती है. And I'll show you a picture here, so you can see the difference between the two. This is a sun protected skin, and this is a sun exposed skin without any protection. So you can see how many lines and wrinkles and so leathery appearance आ रहा है in the skin. This is all part of photo aging. So what can you do with respect to aging? Number one is your sunscreen, because it is going to protect you. The other thing that helps you with skin aging is now the growing industry of aesthetics. So aesthetics has now come up with a lot of things, chemicals that you can use to dampen the response of aging, whether it might be in the form of peels, whether it might be in the form of
PRP injections, whether it might be in the form of आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही है. Again, aesthetics is a growing industry. There have not been a lot of research and studies to validate the effectiveness of these things. हाँ, studies हो रही है, and there are things in the literature जो कि published हुई है. Studies have been reported telling you the usefulness. But again, जो traditional dermatology had that does not focus on the cosmetic side of things. उसमें skin aging के लिए जो है traditional dermatology में we don't have a lot of things to help. This is all part of aesthetics, and a lot of people are getting these sort of treatments because it helps them. But again, when choosing the treatment, it is very important to see what you are getting, from whom you are getting, and how much research and how much validation all these things have before you get it. So please, whenever you do go for any such treatments, do your research and see how much it's going to benefit you before you jump on.